It's a small, cozy place. Yeah. Mr. Nikhil, since how long you have been doing tours? Tours, it's been somewhere around 11 years because as I started my journey from HMI, Himalayan Mountaineering Institute, I was a student there, passed out my adventure, went up to the highest point of West Bengal when I was like about 16 years old, and then I did my basic course and my advanced, and of course now I work as a professional certified and licensed guide here in Darjeeling from GTA, and that was from 2014. So since then, yeah, I've been doing tours around Nepal, Sikkim, Bhutan, and of course Ladakh, Jammu Kashmir, and all those places. Mostly trekking. So mostly adventure tours? Yes, mostly adventure tours. I do cycling also. So that is like mountain biking here in Darjeeling. So I just started like 2 years ago. But today it will be all about food tours. Yes, it will be about food and of course about our history too. So we are starting our Darjeeling food tour with Kunga restaurant. Yep. And what are we going to eat here? I think we're gonna have thenthuk and momos first to start off from Darjeeling because we gotta keep some space for a lot of places. It's a Tibetan restaurant. It is like Nepalese also mixed. It's mixed with Nepalese also, like the dumplings out here. Thenthuk. Thenthuk, yeah. Veg thenthuk. Chicken thenthuk. Chicken thenthuk. Okay. Oh, my handwriting is very bad. I hope she will understand. Next, Chicken momos. chicken momos. Or you can have pork momos if you're comfortable with that. Let's have chicken momo. You can also eat. Can you read it? Yeah, chicken thenthuk soup and chicken momo steam you want? Yes. So it is not Darjeeling, it's Darjeeling. Right? Dorje is the lightning bolt where the Tibetan gods hold it in their right hand, like that. If you notice inside a monastery. And of course, Ling means the place, land. So the meaning of Darjeeling would be the land of thunderbolt. Same way as I told you, Kurseong is named after a wild orchid known as Kursung cereus. It's white in color. Thenthuk is flat noodles. Yes. Huh? Yes. And then you have shredded chicken in it. Yep. But the quantity is quite huge. The portion size. Yep. Oh, That's good. let's have some momos. Juicy, plum, nice. Can I have one more? Sure. See the juice dripping out of the momos. Thank you, man. Okay. See you, bring it up. Thank you. So we are in Bhola Aalu Dum space. So we are here to have the famous Bhola Aalu Dum, just below the Gandhi Road. भयंकर लाल रंग कैसे आया हुआ है? ये फूड कलर है सर. फूड कलर डालते हैं. ये हम लोग कलिम्पोंग में भी देखे, वहाँ भी फूड कलर डालता है. सब लोग यही कह रहा था कि अगर फामी में कलर डालेंगे नहीं तो लोग नहीं खाएगा. लोग नहीं खाएंगे. और उसके बाद फिर नूडल्स अगर पीला रंग का नहीं होगा तो लोग नहीं खाएगा. और आलू दम लाल नहीं होगा तो लोग नहीं खाएगा. हैं? चलिए. ये जहाँ तक हमको याद है, आलू का शुरुआत हमारे दुकान से हुआ है. वो भाई को ज़्यादा मालूम होगा. हाँ, वो बता रहे हैं कि उनकी मदर भी यहाँ पे खाने आती थी. ये भी आ रहे हैं. अब कह रहे हैं कुछ साल में इनका बेटा भी खाने आएगा. अब यही के लोगों की वजह से हम लोग फेमस हुए हैं. खैर हम लोग फाइनेंस से तो पैसा तो उतना नहीं कमा पाए, लेकिन हाँ नाम कमाए हैं. यही जीवन में यही तो होना चाहिए, है कि नहीं? लोग याद रखे. जी सर. तो आलू दम वैसे नेपाली डिश है ना? Aalu Dum is actually Nepali dish here. Like this is like a his version of Aalu Dum. His version of it, and like people have their own version because now we have Aalu MiMi. So we put the dry noodles and then we put the Aalu Dum on it. So that's Aalu MiMi. That's another one. Now we take it with chips, Cheetos, anything. Anything, you know. So it goes well with anything, but you need some crunchiness. Yes. That's why you add finger chips or chips. YY or anything. ठीक है, बनाइए हम लोग के लिए. हम लोग के लिए कौन सा वाला बना रहे हैं?
जैसा कहेंगे सर आप। हमको तो ये वाला बना के दीजिए जो आप दिखा रहे थे। इसको हम लोग बचपन में बोलते थे फोफी। फोफी हम लोग बोलते हैं सर। यही फोफी बोलते हैं यहाँ भी। हम लोग नहीं, यहाँ पे फिंगर चिप्स बोलते हैं कि हम लोग गांव में फोफी बोलते हैं। हाँ, उसको हम लोग ऐसे उंगली में लगा लेते थे जी सर। और बचपन में खाते थे। 10 पैसा का मिलता था। कितना पैकेट मिलता है? 10 रुपये। हम यहाँ पे 86 हैं सर, और 86 में 20 पैसा का आलू हमको हमारे याद से है 20 पैसा का आलू हम लोग बिकता था पहले। और हम लोग पेपर में कागज़ भी देते थे, कागज़ होता था और काट का चम्मच होता था। 20 पैसा से करते करते अभी 10 रुपये तक आया हुआ है। और नीचे लाइन में है नया नया सब खोले तो 20 रुपया 15 रुपये बेचते हैं सर। चलिए 10 रुपये चलता है। लगाइए महेश जी, खाया जाए। हो जाए। आप नेपाली बोलते हैं पूरा? जी बोलते हैं। अरे वाह, हमको भी आता है। राम रो मिठो चा। चलिए धन्यवाद महेश जी। फोपी भी खिलाइए। फोफी इसको बैठ के साथ में। अच्छा, बैठ के खाएंगे। This anybody will die for this, you know, because in Darjeeling, like mostly, right now I'm having like all. I can- because if you go take me to another restaurant, no, this won't happen, you know, because we are locals, so we would definitely love that. It's an emotion for you. Yeah, and of course like a lot of memory also, because from childhood time I think we have been having that. ये इसमें मिमी है, सेव है और ये आलू दम है और साथ में इमली है। सी द कलर एंड द थिकनेस ऑफ द ग्रेवी। Wow. सही टेस्ट है आज भी वही। हाँ, इट्स सो फ्लेवरफुल। Sometimes we used to take it home, you know, watching TV. We used to have this as a snack. चिकन वाई डाला है तो उसका भी फ्लेवर है। It's not that hot. Some like it very hot, you know. या वो कह रहे थे कि चटनी पड़ी हुई है, हाँ, आपको it's अगर तीखा pretty hot, खाना है pretty hot. तो ये लाल मिर्च की चटनी डाल लेते हैं। अच्छा लगा बहुत मेरे को, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है दार्जिलिंग का। और जैसा निखिल दाजू बता रहे हैं, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक इमोशन है, नॉस्टैल्जिया है। हाँ। हैं? हाँ। एकदम चटपटा, खट्टा और मीठा भी, सभी जायका है इसमें। चलिए धन्यवाद। So we are right now here in front of the Darjeeling post office, in front of the big bazaar, and out here is the famous Dragon Market and the Market Market. Mostly famous for all the wares like shoes, fashionable clothes, jackets, and of course Darjeeling's fashion run like whatever, like it's there in the US and the UK, they want the fashion here too. So like if you go and look around, you'll find mostly all the things, but it's not authentic, of course, right? It's copy. Copy. Yeah, but you can find almost everything, from jackets to caps. So this is the main Orient Road, alright, and this is the way we came from just now after having Aalu Dum. So we are heading towards Bata, main road, alright, and the main market down. Hi. So, welcome to the Walis Cafe, Darjeeling. Walis Bakery. Yeah. That's the veal pop. I would like to try that. Yeah. And then some puffs. Yeah, first one, these ones are famous. This goes well with chai. Yeah. तो फिर चाय कहाँ मिलेगा फिर? Chai तो ऊपर चौरास्ता में. वहाँ जाएंगे तो पफ्स यहाँ से ले लेते हैं। Okay, fine. चाय वहाँ ले लेंगे। Okay, fine, fine, fine. और थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं व्हील पॉप, ये मीठा वाला है। ये मीठा वाला है। ये तो सॉल्टी है। Is it?
salty, eh? अब स्वीटनेस आया, Oh, I think it's sweet, bro. स्वीट एंड सॉल्टी बहुत। इसका शॉप कितना साल पुराना है? शॉप ये आपको 70 ईयर्स 20 years हो गया। इसका ग्रैंडफादर ऊपर था, ऊपर रोड में वहाँ स्टार्ट किया, एमपी रोड में। एमपी रोड। आप लोग कहाँ क्या रहने वाले हैं? हम तो यूपी के, हमारे ग्रैंडफादर कहाँ? बलिया। अरे अभी लोग भोला जी के यहाँ गए, वो भी यूपलिया के, भोला आलू दम। आप लोग सेम जगह के? हाँ हाँ, बलिया। चलिए। इतना बड़ा बड़ा बन। ये आपका चीनी वाला होगा बन। और वो ये आपका श्रीमाल बन बोलते हैं इसे। हम लोग के उधर रमज़ान के टाइम पे इसमें काटता है, उसमें लगाता है मक्खन और जैम, उसको बोलता है बटर शीरमाल। और उधर खाता है बहुत, शहरी में खाता है उसको। ये वाला वही वही वाला है ना, इसको आप लोग शीरमाल श्रीमाल बोलते हैं। शीरमाल बोलते हैं ना, वहाँ भी शीरमाल बोलता है इसको। जी, इसमें लेकिन हम लोग मक्खन उक्खन नहीं लगाते। ये आपका ये क्रीम वाला है, कस्टर्ड क्रीम होगा आपका ये। कस्टर्ड क्रीम, कोकोनट, चीनी और प्लेन, लेकिन है सब स्वीट। ठीक है अशोक भाई, शुक्रिया। Thank you, bye. Thank you. ये आपका कालिम्पोंग में भी दुकान है ना? मालिक का मतलब रिलेटिव कई है ना? वहाँ हम कल चाय पिया था। ये शॉप बहुत पुराना है। It is. There are two out here. दो नारंदास ऊपर भी है। वो अलग है, हाँ ये अलग है। हाँ असली नारायणदास कौन है? मुझे भी। Chai is actually Camellia Asamica, no? That is the Indian chai, because out here Darjeeling is famous for Camellia sinensis. That's the Chinese tea. So chai is actually, it's like the same gradient, and of course CTC. CTC of course stands for curding, tearing, and crushing. That's the process how they make chai, right? So because the Queen of England was actually addicted to drinking the black tea from China, so until and unless she sent a spy to China and the tea was smuggled out from China, she always presumed that green tea, black tea, oolong tea, white tea comes from like the different species of plants. She never knew that the processing was the same, but the plant was one. The processing was different, So it was actually by 1849 that the first tea was brought from China, smuggled out to Calcutta, and by the time the seed was already started to germinate. So actually, if you look at the history, Darjeeling was taken for lease for only for 3,000 rupees per annum. Alright, that was in 1835, after the Anglo-Gorkha War happened in 1814. So after 1835, since Darjeeling was taken for lease, the Sikkim king had to give it for lease because the Sikkim king also wanted to be in the good books of the British East India Company. Since the British East India Company had helped the Chogyal to get back the land between the two rivers that was in the Anglo-Gorkha War. So after 1835, of course, tea plantation came in, and because of Camellia sinensis, of course, the Opium War also is like connected with the tea, right? If you look at the proper history. So after the 1835 taking Darjeeling for lease, 1849 was the time where the first time Darjeeling was introduced by tea, because Darjeeling was supposed to be taken by the British East India Company as a sanitarium. Officers down there in Calcutta at that time, they used to struggle with the heat and of course sickness. They had no place to go in order to recuperate. So they needed Darjeeling because every other state had a hill station. So Darjeeling was actually taken for a sanitarium. This building right in front of us is known as the Eden Hospital. That was the first building to be made in Darjeeling. That was actually the sanitarium. Achha, tell me, I have one question. We call Shimla as Queen of Hills. We also call Mussoorie as the Queen of Hills, and we also call Darjeeling as the Queen of Hills. There are so many Queen of the Hills. But which is if you look at the history, this is the first Queen of the Hills, no? Because they came here, as I told you, by the time British East India Company came here, they proclaimed Kanchenjunga as the highest mountain of the world. And of course, we had the first tea garden, right? And of course, the Queen profited a lot because she had a lot of tea gardens after it. Because the tea was a success. Because it had to have the appropriate weather, appropriate climate for that the Camellia sinensis, the Chinese tea, to grow in Darjeeling. So and because of that, of course,
we call Darjeeling the Queen of the Hill. Why? Because the history starts from here. Dr. Hooker, the first botanist to come here and name the magnolias and the chapberries and the rhododendrons. Actually, there was a point where he ran out of words, and he named the magnolia, the pink color, magnolia chapberry. It's actually his friend's name. It was named after Dr. Adabel Champagne, the superintendent officer of Darjeeling, the first superintendent officer of Darjeeling. This also comes somewhere around 1849. So you know, Darjeeling has its authenticity, its charm, and the mapping history, and of course the main history and the culture and the authentic background of Darjeeling. So of course Shimla and Mussoorie, they have their charm too. But we have to come back and look at the history, because Darjeeling is the main place where the first mountaineer was born, Tenin Sherpa, 1953. First person to climb Kanchenjunga was 1955, Joe Brown. Alright, and all this history you have to take it into consideration. Why is Darjeeling called the Queen of the Hills? How do you remember all of this, man? I think I have to write it down. Tea is good. So we are here in Bai's place, one of the most famous chats in Darjeeling, here near Bata. अभी बड़ा मुश्किल है बारिश में चाट खाना। अरे हम पकड़ तो लिए हैं कि आप बिहार से हैं जी। कैसे पकड़े बताइए? आप जब बोले अथी अथी है कथी है, मतलब हम बोले बिहार में। कहाँ से हैं बिहार में? हम लोग मुजफ्फरपुर बेरिया स्टेशन। अरे बेरिया 0 माइल सब घुमा हुआ है हमारा जी, हम लोग है मुजफ्फरपुर से यहाँ आए हैं। सही, क्या बात है। तो मुजफ्फरपुर में ऐसा चाट थोड़ी मिलता है। ये तो आप दार्जिलिंग वाला चाट बना रहे हैं जी। क्या बात है। कितना साल से हैं आप यहाँ पे? ये दुकान का आपका नहीं होने से 45-46 साल हो गए। पापा करते थे। 45-46 साल हो गया। वही हम बोले ऐसा चाट तो मुजफ्फरपुर में हम कभी नहीं खाए, हमारा तो बचपन वहाँ गुजरा है। अब बेरिया स्टेशन में आइए खिलाएंगे। है ऐसा वाला? हाँ, वहाँ तो हम चाइनीज रेस्टोरेंट खोलेंगे। चाइनीज रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। यहाँ से चले जाइएगा, यहाँ से क्या है? हाँ, नहीं, वो अपने ही घर में करे रहेंगे। 45-46 साल पिताजी शुरू किए, अब आपको आगे ना बढ़ाइए। तो बाकी ये नहीं होता है ना, नहीं होता है। अकेले कैसे करेंगे? पहले हम लोग के थे तब काम दीदी लोग करते करते थे। अब अकेले आदमी हम क्या करेंगे? पापा भी तबीयत खराब है, मम्मी का भी तबीयत खराब है। मम्मी है? जी। अच्छा, तो वापस घर जाने का तैयारी है अब? कब चले जाइएगा? जाएंगे, अभी देखेंगे, आप सेटल होंगे। चलिए, हम तो मतलब लकी हैं कि आपके दुकान पे आ गए। क्या पता कुछ समय बाद आता है आप नहीं मिलते हैं हमको। यहाँ सुबह से आए, बारिश हो रहा है, इतना अभी तेज हो गया, इतना कष्ट में हम क्या बताएं। अब हम चाट खाएं कि छाता पकड़े, हमको समझ नहीं आ रहा है कि दोनों पकड़ें। ये है दार्जिलिंग का चाट, जिसमें आलू टोमेटो केचप में बनाया गया, उसके बाद उसमें मूंगफली, सेब, निमकी और कॉर्नफ्लेक्स, फिर साथ में और केचप, मिर्च वाली चटनी, दही, प्याज, ये सब डाल के बनाते हैं। निम्बन बा बढ़िया है। बढ़िया, मीठा बहुत है। असल में हम मोमो वाला चटनी डलवा नहीं ना। थोड़ा सा चटनी ले लीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा सा लीजिए, हम तीखा कम खाते हैं। वही तो थोड़ा सा लीजिए। बस। So what's your opinion on that? इट्स वेरी टेस्टी। It is. चटपटा और खस्ता। खस्ता, हाँ हाँ। अब आपसे मुजफ्फरपुर में मुलाकात होगा आपके चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे, बेरिया मिलेंगे, ठीक है ना? चलिए, चला जाए। राम शंकर प्रसाद जी के दुकान पे सादा पान, इलायची, सुपारी और सौंफ के साथ मीठा पत्ता में। So we are at Islamia restaurant. Yep. They specialize in biryani.
बिल्कुल एकदम होमली काइंड ऑफ मील है ना. मतलब व्हेन वी से होमली इट्स लाइक लेस स्पाइसेस, लेस ऑयल. थैंक यू. आपके रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए. कब से है आपका रेस्टोरेंट यहाँ पे? 1952 से. तो किन्होंने शुरू किया था? ये हो गए थे दादाजी जी से. उसके बाद वालिद ये चल रहा है कंटिन्यू. और आप लोग कहाँ के पीछे रहने वाले हैं? ये सब बिहार से. बिहार से हैं? 1952 से यहाँ पे आके इधर पीछे सेटल हो. ये बहुत अच्छा लगा खाना आपका. थैंक यू मिस्टर निखिल. वेलकम सर. बहुत अच्छा रहा आपके साथ दार्जिलिंग का फूड टूर. इट वाज माय प्लेजर. So the rain has stopped now and we are going to start another food tour of Darjeeling with Mr. Ujjwal. This is a street food market. Right. Yeah. Basically, these are street food, mostly for tourists, and some locals also eat here. And they're different, as you can see, you know. Mostly fried items. Yeah, mostly fried items. We have chicken chili, momo, Yeah. chicken momo, veg momo. ये फाले है ना? Yeah. Then you have French fries, steamed momos, noodles. This is Benny's Cafe. Yeah, this is very famous cafe. Hi, bye. Hello. He's the owner of the shop. Hello sir. And he's also, we went to the same school. He's a little junior to me. Yeah. We'll have a cup of tea only. Tea without sugar. And mixture भी है, निमकी, मिठाई. We have everything like dosa, milkshake, कचौरी. कब से है आपका रेस्टोरेंट? 1977. आप लोग पीछे कहाँ से हैं? पटना. There was a movie hall just right over there. It was called the Ring Hall. And at that time, there were only two places where they used to, we used to have cinemas. The one was Capitol Hall and then the Ring Hall, you know. So every time when there was an intermission, people used to come out and buy all this Aalu Bhuja, you know. So it's very famous for your Benny's Aalu. So now still this is the Benny's Cafe. The Aalu Bhuja shop that just shifted over there. So maybe we'll go there later, you know. The food is very diverse in Darjeeling. You have Chinese restaurant, you have Thai cuisine, Right. I mean, see, you have Tibetan cuisine, you have See, North like- Indian, South Indian. because Darjeeling has always been, a very important place culturally. Because the British were here, so they brought in many food from different parts of the world. And then a lot of Chinese people are also here, so we have all the Chinese food, the Marwadis, the Nepalis, the Tibetans, you know, and even tourists coming here. So they introduced many different types of food. Now we have Korean, Japanese, and all this kind of stuff. You know? So not just the food, the culture is also very vibrant in Darjeeling. Unlike any other hill station, because I have also been to many hill stations in the north, like for example Shimla, Manali, you know. But Darjeeling is quite different, basically because here you have amalgamation of different cultures, you know. So you right from music, you know, there are very good musicians in Darjeeling, some real, very, very creative people, you know. People here like creativity, they like music, they like food. So culturally very vibrant, I would say. ये है काला जामुन. आई प्रेफर काला जामुन और गुलाब जामुन. Okay. ये थोड़ा ज़्यादा फ्राई होता है ना, तो ये शुगर कम एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू गुलाब जामुन. Right. एंड इट्स यू कैन सी द ग्रेनी टेक्सचर. चलिए सर, थैंक यू. Mr. Anubhav will come here and try the local Aalu Dum, which is very, very famous here. आलू भुंजा खाना है. नॉर्मल आलू भुजा. नॉर्मल आलू भुंजा जो एकदम क्लासिक स्टाइल में बनाते हैं ना, वो वाला. सेव,
चिप्स, मतलब आपको जैसे कस्टमाइज़ करना है वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं ना। कोई अभी देखा कोई एक लेस के पैकेट में हाँ जी, हाँ जी, आलू दम डलवा लिया, तो कोई सेब डलवा लिया, कोई मकई डलवा लिया, कोई मीमी डलवा लिया, जैसे चाहे वैसे बनवा सकते हैं। पैकेट का चीज़ है ना, सब में बनता सब बन सकता है। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद करता है लोग? है। ये अभी तो हॉट केक में मिमी है। सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। हाँ, तो गुप्ता जी आप कहाँ के हैं? हम तो यहीं के हैं, लेकिन हम लोग का जड़ है बिहार का। बिहार में कहाँ? हाँ, मतलब हम लोग का ये जो बेनी है, हाँ। बेनिस कैफे। ये पटना के हैं तो? हाँ, तो ये बेनिस कैफे मेरे दादा के पिताजी का नाम है। हम लोग को दुकान पहले वहीं पर था, उस ठीक अपोजिट साइड में था, बड़ा सा था, उसमें कारखाना वगैरह सब इसमें ये सब बनता था। हाँ, वो बता रहे थे अभी हम लोग को, जो उज्जवल जी बता रहे थे कि पहले यहाँ पे थिएटर होता था, जी जी तो इंटरवल में लोग निकल के जी हाँ। आके आलू भूंजा खाता था। हाँ, वो तो समझिए कि वो टाइम मतलब सुबह उठने के साथ हम लोग पेपर में पैक करना शुरू कर देते थे। हम लोग एकदम छोटे थे, जो पैकिंग होता था वो हम उठाकर हम खरीद देते थे। और यहीं का लोकल आलू है? जी। कहाँ से आता है आलू? ये देखिए, कभी कभी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकल आलू। पहले तो हम लोग को लोकल आलू मिलता था, माली मंजन वगैरह से आता था। तो वो हम लोग चाहते वो आलू का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है वो, लेकिन वो दिक्कत होता है उसको छीलने में, बहुत दिक्कत। आजकल वो आलू आता ही नहीं है। अब ये आता है आपका हॉलैंड आलू बोलते हैं। हॉलैंड आलू? हाँ, हॉलैंड आलू बोलते हैं। लंबा लंबा बड़ा बड़ा आलू ये होता है। हाँ, वो आलू। ये कहाँ उपजाया जाता है? ये सब क्या बोलते हैं, सब प्लेन साइड का ही है, यहाँ हिल्स का नहीं। बड़ा सही है। हम आज तक कभी हॉलैंड आलू नहीं खाए। हम हॉलैंड आलू खा रहे हैं दार्जिलिंग में। नाम इसका पड़ गया हॉलैंड आलू। हॉलैंड आलू। ये मकई चिप्स में भी डालने से अच्छा है, क्रंचीनेस आ जाता है, और गर्मा गर्म ठंडा मौसम में खाने का भी मज़ा आता है, और चटपटा भी है। आप लोग कब आए यहाँ पे? बिहार से कब मूव किए? हम लोग का 5 पुश्त हो गया। 5 पुश्त हो गया। यहाँ पे मतलब फूड बिजनेस में काफ़ी लोग बिहार के हैं, बिहार यूपी के। हाँ जी, इनको हम छोटे से देखते हैं हमको। हाँ, ये दादा तो हम बहुत छोटा था, हम तभी भी आपको देखते हैं, अभी भी ऐसे जैसे का तैसे हैं। यहाँ का लोग सब ऐसे कैसे बदलता नहीं है नेचुरली। ना। मोमो वेज बनाते हैं जी, वेज प्योर, वो भी डालता है, लोग इसमें खाता है। हाँ जी, इसको स्मैश करके हाँ, उसको आलू मोमो बोलते हैं। वो आलू मोमो बन जाता है। जी, आलू बन में डाल दिया तो आलू बन हो गया, आलू बना, भुंजा डाल दिया तो आलू भुंजा हो गया, मिमी में डाल दिया तो आलू मिमी बन गया, तो मतलब आलू चिप्स। हाँ, लेज में डाल दिया तो लेज आलू। आप खाते हैं कभी कभी? हम डेली खाते हैं। डेली खाते हैं? जी चलिए सही है संतोष जी, जी। एकदम खा के संतुष्टि मिल गया, हमको संतोष मिल गया आपसे बातचीत करके। बहुत अच्छा लगा, आप इतने अच्छे से आराम से हम लोगों को पूरा कहानी बताया आलू दम के बारे में। यहाँ भी अभी तो फुर्सत, अब तो बंद करने का टाइम है। हाँ, दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिलता। चलिए अच्छा है ना, तो सही टाइम पे आए हम। सही टाइम पे। चलिए क्या लिखा? 4 पिलर्स ऑफ सोसाइटी: डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, एडवोकेट। Cheers. So you have worked as a tour leader for 17 years. Yeah, almost. And you have traveled length and breadth of the country. And now you are back to your home. Yeah. And then breadth of the country. Not just this, but Nepal, especially because I was to trek. But India, I've done almost all the touristy places. So how is life back at home? Like, amazing, man. I mean, because see, Darjeeling, one thing is the weather is beautiful. You get to see a lot of, and here life is, you don't need a lot of money, because I have taken up a small room in Delhi. We pay about 35,000 rupees. South Jang include 2 rooms, and then AC and all that, and all that. Here, the house I have, if I have the same house in Delhi, I would be paying like 4-5 lakhs easily. yes. So that time only, I haven't talked about the air quality and no insects, no much about that. I really like the vibe of this place. Yeah, like it's very nice. no loud music. Yeah. You can have the conversation. Exactly. Huh? Exactly. You can enjoy your drink. Right. That's it.
लोगों को लगेगा कि ये अनुभव दार्जिलिंग में जाके तंदूरी रोटी और दाल क्यों खा रहा है, लेकिन Tell him no, he said it closed at 9. यस रात हो गया, कहीं खाने का ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे हमने बिल्कुल अपना प्रॉपर नॉर्थ इंडियन खाना ऑर्डर किया है, वो भी कड़क तंदूरी रोटी और दाल फ्राई। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बस हम आज का अपना फूड टूर यहीं एंड करते हैं। अब कल मॉर्निंग में उज्ज्वल दाजू के साथ दार्जिलिंग का फूड टूर करेंगे और घर पे भी कुछ बनाएंगे। हाँ? चलिए। Darjeeling Himalayan Railway is a UNESCO World Heritage Area. Right. It's a living heritage. It's a living heritage. एक्चुअली ये तो जस्ट आपको सैंपल के लिए हाँ। इसमें 250 ग्राम सॉसेज रहता है और 100 ग्राम्स मीट, 100 ग्राम सलामी एंड 2 एग्स। 250 ग्राम्स। 250 ग्राम। आइए आइए आइए, झालमुरी पुचका चाट, झालमुरी पुचका चाट, आइए 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 आइए। देखिए हम किसी को कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं। So, कुछ नहीं आ रहा है इसमें, there's nothing, just pan grilled. This mushroom, the texture is very meaty. Right. Huh?